So when there is a thought of Garbha Sanskar, the first question is from when we are going to start the Garbha Sanskar. कब से शुरू करना होगा? तो पहला तो मेरा आंसर यही रहेगा कि जब आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ है, जैसे कि पीरियड मिस हुआ है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तब से आप स्टार्ट कर सकते हो गर्भ संस्कार. एंड गर्भ संस्कार इज़, एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट इज़ अ फिजिकल केयर एंड साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द body taken by any person, any mentor, any doctor. So you just go to any person or who is preferably a gynecologist, confirm your pregnancy and start thinking and planning regarding your pregnancy. First thinking is of course about the treatment of your body, which is supposed to be given by a gynecologist. There is a folic acid, there are some protein powders, there is some medicine to reduce the nausea. But you know, dealing with the nausea in pregnancy is a very difficult thing. You don't feel like eating, you don't feel like feel like vomiting, there is a increased nausea, and you are always worried about that. But as per my teachings to the patients and to my to my students, how to deal with that nausea, how to deal with that vomiting, you can give the medicine, but sometimes the nausea and vomiting are not going to reduce by the medicine also. And the thinking is also necessary, the positivity is also necessary, the thinking by the lady is also necessary, that she is going to face it, because it is just a normal symptom of the pregnancy. You can reduce it, it can be controlled. And you need to give some food, some proper food, some quality of food to yourself, so that that food will be uh, converted into the products which are going to be going towards the baby, and the baby is going to grow because of your eatings, because of your diet, because the baby is going to grow inside the uterus. The uterus is going to get blood supply, and the blood, your blood is going to get some nutrients from your diet. तो आपका जो खाना है ना, वो खाना बहुत अच्छा रहना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट 3 months द ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड इज़ देयर. द बेबी इज़ गोइंग टू डेवलप द मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑर्गन. मीन्स बेबी के जो ऑर्गन डेवलप होने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनके जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं तो वो इस पीरियड में डेवलप हो जाते हैं. देखिए कि एम्ब्रियो फॉर्म होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है. इतना नॉलेज तो आप सबको है, लेकिन वो एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद वो जो 2 सेल का स्टेज रहेगा, उसके बाद 6 सेल रहेगा, उसके बाद 12 सेल रहेगा, तो उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स रहेगा, और उसके बाद बेबी के वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, किडनी है. तो ये सब ऑर्गन्स का जो बेसिक पॉइंट्स रहता है, जो बेसिक डेवलपिंग पॉइंट रहते हैं, उनका ग्रोथ इस पीरियड में होता है फर्स्ट 3 months में, और उसको ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं. तो अगर हमें बेबी के जो ऑर्गन्स है वो अच्छी तरह से डेवलप होने चाहिए, तो देखिए ना, हम लोगों को बहुत ही अच्छा आहार लेना चाहिए. प्रेग्नेंट लेडी को सोचना चाहिए कि जो मैं खाऊंगी वो मेरी बेबी की तरफ जाने वाला है. सो यू नीड टू टेक proper nutritious diet, even if you are not feeling like eating, even if you are feeling like nauseating, you need to have some diet which is going to be converted into the blood, and that blood is going to give blood supply to the uterus. So start eating in the first trimester, even if you are feeling nauseating, even if you are feeling like vomiting, even if you are suffering from anorexia, go and eat something. Just eat something, and not only something that is the nutritious to your body. So I'll be talking about the diet in the first trimester in my next video. Bye.